Yeah, she's back. Hello. Hi. I was just wondering, I hope everyone's on the same scale. Is it fine? Like, I don't know. I mean, are people with us? No, few people have joined us back again, and they might join us in next few minutes also. So we can continue with our question, which I have discussed, which I've mentioned you in our last few minutes. So the person is not able to quit medicines, and he's struggling with quitting those medicines which he's been taking from last long years. I think I don't know the number of years, but then how you can help him out to quit those medicines? Because yesterday we discussed about Pranav's experience, and he had his personal experience, and he quoted he gave a disclaimer that don't try it personally because it varies person to person. So what is your suggestion and what is your answer to his question, like the person who is struggling now? Okay. So yeah, I heard Pranav yesterday about his skill. I'm glad it worked for him, but I'll try to explain it in with probably an example. So जब हम छोटे होते हैं, हमें साइकिल चलाना जब हम सीखते हैं, तो अगर हम डायरेक्ट दो व्हील्स पे चलाएंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट we won't be able to do that. हम तो डायरेक्ट गिर जाएंगे. हम गिर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नॉट बिकॉज हमें साइकिल चलाना कभी नहीं आएगा, सो नॉट बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट है, बट शायद इसलिए क्योंकि मुझे वो स्किल अभी आती नहीं है, राइट? तो मुझे आई एम होपिंग हम सबने ऐसे ही सीखा होगा, but that's how I learned it. We have those two tiny side wheels जो हम पहले रखते हैं कि ठीक है हम गिरेंगे नहीं, हम पहले let's master the skill of cycling पहले. अब वो व्हील्स जरूरी हैं, वो व्हील्स ये नहीं आपको बताएंगे कि आप इसके बियॉन्ड मूवी नहीं कर पाओगे, राइट? पर वो सपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है. ओके, व्हील्स अगर आप पूरी ही जिंदगी ये सोचें कि मैं साइकिल 4 व्हील के साथ ही चलाऊंगी, तो वो करेक्ट नहीं है. और अगर आप ये कहो कि सडनली एक दिन आप बोलोगे बस बहुत हो गया, अब तो मैंने ऐसे ही हटा देना दोबारा, आप फिर दोबारा गिर जाओगे क्योंकि आपने बैलेंस नहीं सीखा है, राइट? सो आप जो मेडिकेशन ले रहे हैं डिप्रेशन की, और आप अगर काफी सालों से रह रहे हैं, आई एम नॉट श्योर हमने कितना शेयर किया है यहाँ, बट वी हैड अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वन. सो आप काफी टाइम से मेडिकेशन ले रहे हैं, तो आप काफी टाइम से साइकिल विद 2 व्हील्स चला रहे हैं. हाँ, शायद कभी कभी लगता होगा कि बस हो गया यार, कितने टाइम तक आया हो, सो वांट टू साइकिल ऑन 2. यू कैन, आई एम नॉट सेइंग कि आप हमेशा वो 4 व्हील्स पे चलाओगे, पर आई मीन दैट्स हाउ आई लर्नड इट. आप थोड़ा सा ट्विस्ट करते हो उस व्हील को ऊपर, कि अगर फिर भी थोड़ा टेढ़े हुए तो संभल जाएंगे, फिर आप धीरे से और ट्विस्ट करते हो, फिर आप एक साइड हटा देते हो, या एंड देन प्रोबेबली आप दूसरा हटाते हो. तो इट्स अ प्रोसेस, राइट? तो आप जो अभी कर रहे हैं, आप मेडिकेशन ले रहे हैं, आप शायद अपनी साइकिल 2 व्हील एक्स्ट्रा व्हील्स के साथ चला रहे हैं. पूरी जिंदगी ये चलाइएगा, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा. मैं शायद पर्सनली काफी लोग को जानती हूँ, और एक को तो बहुत क्लोजली जानती हूँ. आई होप शी सीज इट एट सम पॉइंट. आई वुडंट नेम हर, बट मतलब वो शायद अपनी डिप्रेशन की गोली वो शायद 10 साल से खा रही हैं. एंड नाउ व्हेन आई आस्क हर कि नहीं पर होता क्या है, मतलब व्हेन डू यू रियली टेक इट, आपको जरूरत कब पड़ती है? आई मीन व्हाट आई अंडरस्टैंड इज जस्ट एंगर मैनेजमेंट. अगर वो थोड़ा एंगर मैनेजमेंट सीख लें, जब उसको गुस्सा आता है उसको नहीं पता चलता है, और वो अभी तक वो दवाइयां खा रही है. सो समटाइम्स आपको एट सम पॉइंट वो व्हील्स हटाने हैं. आप प्लीज ये मत भूल जाइए कि वो 4 जो एक्स्ट्रा व्हील्स हैं वो सपोर्ट व्हील्स हैं, राइट? पर वो आप कैसे हटाएंगे, आप वो स्किल धीरे धीरे सीखेंगे. तो अगर आप अभी ये कर रहे हैं कि बीच में सडनली आप दवाई छोड़ देते हैं, प्लीज वो मत कीजिए. आप गिरेंगे क्योंकि और आपको लगेगी, एंड आई डोंट वांट दैट. जब आप बोल रहे हैं कि सडनली आई लीव इट एंड देन आई फॉल बैक, आई कोलैप्स, थिंग्स लाइक दैट, लॉजिकल है क्योंकि आपने अभी स्किल नहीं सीखी है उसकी. तो माय एडवाइस वुड बी, आप मेडिकेशंस लीजिए, अपनी तरफ से स्किल डालिए. स्किल कैसे सीखेंगे? अगर एंजाइटी है तो व्हाट पार्ट ऑफ थिंग्स मेक यू एंग्शियस, आइडेंटिफाई आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, आप उन ट्रिगर्ड मोमेंट्स में क्या अलग कर सकते हैं. लर्न दोस कोपिंग स्किल्स. जैसे जैसे आप कोपिंग स्किल्स सीखेंगे, वैसे वैसे आपका मेडिकेशन कम होएगा, आपकी छोटी छोटी व्हील्स धीरे धीरे ऊपर होने लगेंगे, एंड इट्स अ बैलेंस यू विल गेन लेटर ऑन. या सो रैंडमली
just don't leave medication. It's not healthy. I wouldn't suggest that any day. But same medication हमेशा से खाना है. Oh, by the way, that friend of mine is eating same dosage 10 साल से. Okay, so it's more like placebo कि मैंने खाया है तो मैं ठीक हूँ. That's exactly क्योंकि डोसेज बढ़ेगा या कम होगा 10 साल सेम नहीं रहेगा. आप 10 साल में सेम नहीं है, right? But I think she settled in with that कि एक पिली तो खानी है, everything is okay. And half of the time I'm like, it's not probably even the dose जो आपको चाहिए अभी. But I think that's what we need to learn. We need to probably learn coping skill. अगर आपको anxiety attacks हो रहे हैं तो आप देखिए कि आप उसको manage कैसे कर सकते हैं. So combine आपका medication with a psychologist. Medication आपको support wheels देगा. Psychologist आपको coping skill सिखाएगा. दोनों को balance करिए धीरे धीरे. जैसे जैसे skills आएगी वैसे वैसे medication कम होएगी. Eventually you will be able to cycle on the 2 wheels without falling in. Yeah, so it's a process. Don't just try to run into it. Yeah. I remember just like, please continue. I'm so sorry. I have one thing which is interesting which I wanted to say. कि he said कि पर मेरा ECG मैंने कराया वो सब normal है. I so wished कि हमारा stress, हमारा emotional exhaustion ये सब काश हमारी MRI या हमारा ECG बता देता तो शायद हम mental health के बारे में बहुत अलग तरीके से बात कर रहे होते. Right? But sadly वो नहीं हो रहा है. तो it sort of doesn't make sense क्योंकि आपके heart में problem नहीं है. I think आपको जो issue हो रहा है वो ये है कि आप शायद I don't know शायद overthink कर रहे हैं, आप anxious हो रहे हैं. मेरे पास ज्यादा detail नहीं है उस बात की, but आप शायद वो कर रहे हैं उसकी वजह से आपको panic attacks हो रहे हैं. तो अगर आप आज ECG निकाल रहे हैं या 10 साल पहले निकालेंगे या कल भी निकालेंगे तो वो शायद नॉर्मल ही आना चाहिए. अनलेस आपका मेंटल हेल्थ आपके फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करना पड़ गया है, लगने लगा है. बट इवेंचुअली आई विश डिप्रेशन शीट पे आता and we could show everybody. I think he was trying to figure out. I think he was trying to figure out and relate to his panic attacks if he is getting some issue with his body organs, other body organs, maybe heart or something. But I think he's getting panic attacks because of his mental health issue only. So he was trying to figure out, I think, कि ये नहीं तो अगर ये है क्या. So I think yeah. And I think we're getting the way message from Simrat that thank you amazing so example. Amazing. I read that. Thank you. I'm glad it makes sense. So yeah, eventually I would just say that just combine it with coping skills जो आपको psychologist सिखाएगा. Medication and psychotherapy go hand in hand. सिर्फ medication मत लीजिए. सिर्फ काफी situations आप सिर्फ psychologist के साथ deal कर सकते हैं जो बहुत और डे टू डे इश्यूज होते हैं, एडजस्टमेंट इशू हो गया, स्टडी स्किल्स इशू हो गए. बट अगर कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो आपको मेडिकेशन और साइकोथेरेपी कंबाइन करनी पड़ती है. जिसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी जिंदगी ऐसे ही जाएगी. हमें सिखाया जाता है कि हम लोगों को स्किल सिखाएं ताकि वो हमारे पास वापस ना आए, ताकि they learn how to deal with it again. Yeah, so I hope combination of the two will help. Yes, thank you, Jyoti, for answering his question. I think because he is struggling a lot from quite a few years now, long years. So my last question from this chain of question is that how to control sorry, I missed that question. Suicidal. It was related to suicide, I think. She's asking, how do we cope up with suicidal thoughts? So this is the last question, then we'll move for our myths part. So suicidal thoughts, because you have already treated few patients you were mentioning about. So this is an anonymous question. Yeah. Okay. So पहली चीज जो I would want to share with everybody is I was reading through the statistics and NCRB 2012 में ऐसा रिकॉर्ड है. NCRB is National Crime Records Bureau of India. 2012 में उन्होंने बोला था कि suicidal rates इंडिया में इतने हाई हैं कि हर घंटे में there are 15 suicides. Yeah, that's the magnitude, which means अभी जब मैं और तुम बात कर रहे थे 1 घंटे के लिए, so 2012 में 15 लोगों ने इंडिया में suicide किया था. That is 2012. आज हम 2020 में हैं. आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स आज क्या हैं, बट
I wouldn't be surprised कि वो बड़े ही होंगे. I mean, I don't know कितने कम हुए होंगे या सेम रहे होंगे, but that's the magnitude of it. Yeah, so it's very important कि हम ये चीज जो अब मैं शायद next few minutes में बोलने वाली हूँ वो अपने लिए भी सीखें, क्योंकि we are all humans, we don't know कल क्या होगा, right? So we need to be prepared. जैसे हम पढ़ाई करते हैं फ्यूचर के लिए, वैसे हमें लाइफ स्किल्स भी लर्न करनी चाहिए फ्यूचर के लिए. एंड आई थिंक दिस सर्टेन फ्यू स्किल्स जो मैं बोलूंगी वुड प्रॉब्ली हेल्प यू योर ओन सेल्फ. या फिर आप शायद, क्योंकि हर घंटे में 15 बहुत बड़ा नंबर है, तो शायद आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जिनको आप हेल्प कर सकेंगे. सो अगर आप सुसाइडल फील कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए. पहली चीज, कोई भी सेफ जगह चले जाइए. मेक श्योर आपके आसपास पीपल है. अगर आप सुसाइडल फील कर रहे हैं और अगर आप रूम में बंद होंगे, not a great idea, right? So then it's going to go worse. Also, ये बहुत I've heard a lot of stigma around suicide कि जिसने suicide किया है वो coward है, या this is not how you live life. Oh, for those people, किसी दिन आप किसी हाई राइज बिल्डिंग के एकदम हाईएस्ट फ्लोर पे जाइएगा, 20th 50th फ्लोर पे, और एक बार नीचे झांक के देखिएगा. आसान नहीं है, राइट? सो जिसने वो किया है, इट्स नॉट इजी. करेक्ट. सो उसने वो किया है जब बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड हो गया है, एंड द पर्सन इज रियली डजंट नो हाउ टू हेल्प. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सुसाइडल जो फील करते हैं, दे रियली विश कि कुछ काम कर जाए, राइट? सो पहली चीज जो आप कर सकते हैं इज लोगों के आसपास रहिए. दूसरी चीज जो कि हेल्प करेगी इज कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हार्म कर सकते हैं उनको थोड़ा दूर रखिए. get them out of your reach, be it blades and things like that. उसको बहुत कॉमन रीच में मत रखिए, क्योंकि आपको पता है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं अभी. उसके अलावा प्लीज टॉक इट आउट टू समबडी, जिस पे भी आप ट्रस्ट कर रहे हो, आपका फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, बट स्पीक इट आउट, बिकॉज अगर आप नहीं बोलोगे तो नहीं पता चलेगा, राइट? एंड देन इवेंचुअली प्लीज सीक आउट अ प्रोफेशनल हेल्प. We are trained to kind of help you better. So do all of that part. I think एक और चीज जो आप कर सकते हैं कि अगर आपको पता है कि you are going to feel suicidal, आप अपनी coping skills ready रखिए कि maybe some sort of distraction will help me, या some sort of going on a jog would help me. So हम सबकी कुछ चीजें हैं जो हमें help कर सकती है. Identify that, जिससे आपको better लगे, distraction हो. You can do that. You can identify these skills with the psychologist or a professional जो आप reach out करें. बहुत common tendency होती है जब हम suicidal feel करते हैं that we drink or we consume drugs. Do not do that. क्योंकि तब you probably wouldn't even guess what you're doing, and उसका magnitude शायद way more higher होगा. So don't do that at all. Coming back to ये था अगर आप फील कर रहे हैं. अगर आप किसी ऐसे के पास है जिसको सुसाइडल फील हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? रेड फ्लैग्स पिक करना सीखिए. ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज हमेशा मैंने बहुत बार सुना है कि ओ हमें तो पता ही नहीं चला, ओ दैट पर्सन सुसाइडेड, ओ वी डिडंट इवन गेस इट. इट्स नॉट रैंडमली मैं एक दिन सोचूंगी कि अच्छा आज मेरा मूड खराब है, आई विल जस्ट जंप ऑफ. दैट डज नॉट हैपन. ओके, उसने बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिए होंगे जो आपने पकड़े ही नहीं होंगे. सो 3 चीजें जो आप ध्यान रख सकते हैं. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 थिंग्स व्हिच इज वर्थलेस, होपलेस एंड हेल्पलेस. अगर आप खुद फील कर रहे हैं या आप किसी और को सुन रहे हैं जो वर्थलेस फील कर रहा है, जो कह रहा है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट केपेबल, सो इट्स अ गुड रेड फ्लैग टू हैव. वर्क अराउंड इट. वर्थलेस के साथ साथ अगर वो आपको ये भी बता रहे हैं कि वो हेल्पलेस है, कोई उनकी हेल्प नहीं कर सकता, वो खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकते, इट्स द एंड. एंड अगर वो होपलेस हैं, वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ नहीं बदलेगा, तो जैसे ये 3 साथ में मिलते हैं, इट इज द पर्सन इज एट वेरी हाई रिस्क. ओके, इट्स इमीडिएट अटेंशन शुड बी गिवन टू दैट पर्सन. सो दीज आर समथिंग जो आप, so अगर आप 2 सुन रहे हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं और तीसरा मिसिंग है, यू स्टिल हैव टाइम टू हेल्प दैट पर्सन. 3 है, so it's a high risk. इसके अलावा अगर आप प्लान सुन रहे हैं किसी का,
कि आई नो सो एंड सो टाइम पे कोई नहीं होगा, सो मैं ये चीज से ये ऐसे ऐसे करूंगा. So that's also a high risk. The person has a plan, so that's a red flag for you. So go around, go help, support in your own way. Be a listener. Do not criticize. Don't say loose statements like "get over it." कुछ नहीं होता है. It doesn't work. Okay, so I think just जो लोग suicidal हैं या जो लोग emotionally exhausted हैं, वो आपसे ये नहीं सुनना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं होता है, because they're feeling it and that doesn't make sense to them, right? So and half the time सिर्फ उनका बोलना should help them. I mean आपसे वो advice शायद नहीं सीख करना चाह रहे हैं, so don't get especially critical कि like I think कल प्रणव बोल रहा था कि you're a male, you know, you don't be a man, stop crying like a girl, and gender related हो या फिर profession related ho, you know, when I think when I heard about Deepika's case, and a lot of people would say, oh, she had everything, you know, why would she go through any mental illnesses? So things like that. So don't be critical, don't be judgmental, and I think that's something which can really help that person. Yes, it was a correct, like very thoughtful answer, I would say, because हम लोग generally इतना deep में सोच नहीं पाते. The way you are explaining is like you are very profound with your words, because you have studied it, you have treated so many patients, so we can relate to the answers also and the questions also. So I think I have covered all the questions. If I missed out any, then I'll also go through them once again. But then we'll start with the myths part now, because I'm also excited for that. Yeah, that's my fun part. Yes. So I think the most common myth which we have come across by a lot of people is like कि psychiatrist or psychologist के पास जाना to be is considered like या आदमी तो पागल है या फिर psycho है. So this is the very common myth which I have come across, and I have shared this with you also, कि insanity और depression को equal treat करा जाता है. और I know about India, I don't know about other countries. Maybe generally human tendency है, I don't know about. I think not in London, not in UK. Not at all. Wow, beautiful difference. Yeah. Yeah, but then in India, okay, it is the case that people consider. Oh yes, totally. Yeah, absolutely. I heard that a lot. Okay, so just to give some context, research कहती है कि इस समय 1 in every 5 people, हर 5 में से एक इंसान किसी ना किसी mental health illness से गुजरेगा, right? So that's the magnitude of it. हर 5 में से एक इंसान, if you can imagine, एक I don't know, शहर में ही कितने सारे लोग हो जाएंगे, let alone we're talking about across the world. Yeah, so that's the kind of people who really need the support. तो I would agree stigma है, but क्या हम कुछ change कर सकते हैं? Absolutely change कर सकते हैं. दूसरों से expect कर सकते हैं कि वो change करें? I don't think so. मैं अलग क्या कर सकती हूँ? तो अगली बार जो मैं सुनूं कि कोई साइकोलॉजिस्ट के पास गया था, मैं ये नहीं बोलूं कि अच्छा तुम्हें वहां भी जाना पड़ गया क्या, मैं स्टिग्मा ना ऐड करूं, ना कि मैं ये बोलूं ओ बेचारी इसको कुछ बोलते नहीं है. I think this is a part which I think Pranav was mentioning कि oh my god हमें नहीं पता कैसे react करें. People right? Don't do that. Yeah, and I think that's coming from the fact कि वो awareness नहीं है, हमें नहीं पता. हमको लगता है डिप्रेशन पता ही नहीं क्या होता है, मतलब डिप्रेशन में शायद सुसाइड ही होता है डायरेक्ट. इट्स अ ह्यूज कंपोनेंट एंड देयर आर मल्टीपल सिम्टम्स, एंड हर किसी के लिए वो सिम्टम चेक हो वो ट्रू नहीं है. लाइक व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, he probably felt low, he probably felt the impairity in his functionality, but he didn't probably feel suicidal necessarily. But क्या हम उसको भी डिप्रेशन नहीं बोलेंगे? नहीं, we will, क्योंकि हम we follow a manual called DSM, ताकि हम सब सेम चीज को डिप्रेशन बोले. So there are certain reasons of why we're calling something particularly. So yeah, coming back, so अगली बार जब मुझसे कोई बोले कि I went to a therapist या I am seeing a psychologist, मैं ओवर रिएक्ट ना करूं और मैं स्टिग्मा ना ऐड करूं, बट शायद मैं उसे ऐसे देखूं कि वाओ दिस पर्सन लर्न अ लाइफ स्किल, क्योंकि आप एसेंशियली वहां एक लाइफ स्किल सीखने जा रहे हो. So maybe when we neutralize that and normalize that, saying ki wow, or probably appreciate it, ki wow, you actually reached out, you know, that's so good. Yeah.
So I think that would help. So yeah, that could be something. And yeah, that's truly a myth that I've heard a lot of times too. Yeah. Yes. So next is like, which we have already discussed in your previous question. I've got the answer that a person needs medication and a therapy both. Like, so this is the one myth which I've received from one person that she's telling, that she has heard a lot that it can be cured by medication. Medicine will only ease the brain, not cure it. So because you have already mentioned in previous questions also that it's a combination of both. Agar aap ek cheez doge to it won't work. So I think we can so if I may add, Shraddha, it also depends on आप किस चीज से डील कर रहे हैं. अगर मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है और आप मुझे मेडिकेशन नहीं दोगे, आप सिर्फ टॉक थेरेपी से मुझे नहीं ठीक कर पाओगे, क्योंकि मुझे चीजें दिख रही हैं, मुझे आपके पीछे कोई दिख रहा है, आप बात करके कैसे सॉर्ट कर लोगे, राइट? सो अ लॉट ऑफ केसेस में, एक्सट्रीम क्लिनिकल कंडीशंस में, वी डू नीड मेडिकेशन. वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट यू कांट गेट वर्किंग विदाउट दैम. But to get out of it eventually, yeah, it's a combination of two. पर आपकी कंडीशन में हो सकता है कि आपको मेडिकेशन की जरूरत हो, so then take it. And अगर हो सकता है कि नहीं हो, so that is also okay. I mean, जब मैं हॉस्पिटल में काम करती थी, I would get people, they'll come to me, and जब सेशन खत्म होता था, they would just different kind of a look कि इसने मुझे दवाई नहीं लिख के दी. So I think that mental, with Indian understanding we have कि डॉक्टर के पास आए तो पिल तो मिलेगी. And then I had to probably clarify as to what kind of work we do, and these skills will help you, in your case. And किसी condition में I had to convey the importance कि नहीं, सिर्फ talk therapy से नहीं होगा. We would need medication, which will reduce as we learn skills. So I think it depends on what you're going through. Yeah. Yes. Oh, and I'm sorry, but if I can add about across the countries, it's different. It is, I mean, I'm glad it's different, but it is like the amount of focus and importance जो mental health को यहाँ मिलता है is beautiful. I mean, at work, one of the days I can just call and say कि मैं mentally well नहीं हूँ आज, and I don't want to come to work. My boss cannot tell me that you have to come. I mean, that's how much they respect कि अगर मेरा हाथ टूट गया होता तो obviously आप मुझे नहीं बोलते, right? तो आज मैं बहुत चीजों से गुजर रही हूँ, या I've had a loss in family and I cannot come in, yeah, I'm facing anxiety or whatever, but I cannot come in. So I think वो वाला part across countries different होता है. Yeah. Correct. So in India, this is very different. You have worked in India also. Yeah, and I think that's with awareness. But mind you, if I tell you, जब मैंने psychology किया था, तब barely, मतलब मैंने सुना था कि काफी लोग कर रहे हैं. But जैसे जैसे मैंने पढ़ाई finish करी और जब मैं पिछले साल 1.5 year back जब मैं Fortis में काम कर रही थी, I had so many interns. मतलब I think सिर्फ हम with Fortis we would do this summer internship kind of a concept. तो सारे जो psychology students होते हैं 11th 12th के, they would do like a weekly thing with us. So it was crazy. Like just in 1 month, I had like about 400 interns under me. Like 400 बच्चे wanted to learn about psychology. That's so nice. So you know what I mean? Yeah. So we are going on that, and I think I can see one of them here. Yeah, so I hope that kind of increases the talk, कि we have more people to talk about it. Less stigma hai. It's not something कि हमें नहीं पता क्या करना है, but it's something कि ठीक है, we know how to deal with it. So I think वो conversations करना, and I think I have few, so I have like couple of friends जो कि जब मैं अहमदाबाद रहती थी, they were like really teeny kids, and now they've grown. I like how they talk about therapists now, like they're open to that idea of therapy. So I think that's very beautiful. At least they started to talk. So they still miss so yeah, yeah. Thanks. I miss that place too. So yeah. Right. So I think at least the good thing is you're talking about it. Yeah. At least you're doing this today. I hope whoever this this reaches out to, जितने भी लोग आज देख रहे हैं, वो और लोगों से बात करेंगे. ये वीडियो शायद बाद में और लोग देखेंगे, तो आई थिंक एटलीस्ट उन लोगों को हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं. सो आई थिंक वी आर गोइंग गुड. Yes. Yeah. I think moving further with our next myth, it's already about
like 7:30 almost. So we'll finish it. Yeah. So next question is that a lot of people are asking the same, that when they talk about mental health to others, they can understand it as a psycho. So I think we have covered that. But next question is, mental health is an excuse or an act to avoid certain situations in our lives. Is that true? Okay. So largely that would not be true. But then as humans, I think we also have a tendency कि हम consciously या unconsciously अपने आप को self sabotage करें. मतलब मैं मान के बैठ जाऊं कि अगर मुझे डिप्रेशन है तो मैं कुछ ही नहीं कर सकती हूँ, is wrong. डिप्रेशन डिफिकल्ट हो सकता है, बिल्कुल. क्या आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं? नहीं. Right? So having that understanding कि I can do something about it would make sense. But yeah, I wouldn't be very surprised if there's a these kind of thoughts or talks wherein people say कि हाँ मतलब इस तेरे को तो हमेशा यही होता है, kind of a thing. I think that stems from insensitivity also sometimes. So yeah, I think I've heard that. Yeah. Okay. Next is that psychologists are psychic, that they can read your mind and manipulate you. I think you also had this misconception when you started your journey. I wish I could. That's my response to that. Read my mind, because even I had this. Now I'm able to recall, but I'm scared of talking to one of my aunt because she's also a psychologist and in Udaipur, I think. Oh. So I'm like, उनसे मैं जब भी बात करूंगी वो मेरा mind read कर लेंगे, उनको लगेगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, वो सबको पता चल जाएगा. So is that so? So for that, just say, I so wish I could, but no, I and everybody else is just as common as you are. It's just कि हमें ट्रेनिंग मिली है, तो हाँ आपसे बात करने से शायद मुझे certain patterns पता चल जाएं आपके. अगर मैं आपसे 15-20 मिनट अच्छे से बात करूं तो शायद मुझे लगेगा कि हाँ ये बंदा शायद ये components और ये needs हैं. But नहीं, I wish, but I can't read minds. Damn. And the next one is that depression generally it's a women's job, not for men. So कल हमने बात करी थी प्रणव से कि he had faced this question from a lot of people that तुझे कैसे depression हो गया, like तो उसको मतलब like he was always a chill guy, and first thing, and second he was a boy, he was a guy, he was a man. So they don't usually get depressed so easily, unlike women. So this is the myth which is very common. Yeah. So I think what I also read on that was about being a psychologist is also a female's job than males. So I think both way के लिए it doesn't matter आप कौन से gender के हो, you are prone, you can have any sort of mental illnesses because you're a human. And रही बात की psychologists females होती हैं, well like any other field जहाँ जेंडर मैटर नहीं करता है, दिस इज ऑल्सो फील्ड जहाँ जेंडर नहीं मैटर करता है. एंड इट्स अ साइंस जो आपको सिखाई जाती है, इट्स अ ट्रेनिंग जो हर किसी को सिखाई जा सकती है. सो इररिस्पेक्टिव अबाउट हैविंग अ मेंटल इलनेस और डूइंग दिस जॉब, इट डज नॉट मैटर अबाउट द जेंडर. Yeah. So I think I've covered the myths. Most of the myths are about like insanity and depression, the same thing. I think I've not missed out any. I didn't get I think one of them. Do you want to read something from? Yeah, sorry. I think Simran's is something that you're probably missing. Yeah, when I talk about mental health to people, they understand it as I'm crazy or a psycho, and even they persuade me to visit a psychological doctor. So whenever like, and can you read the last 2 lines for me? She's just a teenager suffering from problems and she don't know how to overcome it. Okay, now that's the catch with it. Okay, first half stigma है, absolutely है. Second half, अगर आप मुझे ये बोल रहे हो कि you know you're facing something and you do not know how to overcome it, then I don't know what you're waiting for, right? Would you just stay with a broken arm कि भाई मेरा हाथ टूट गया है, मुझे fix नहीं करना आता है, पर I don't know, I'm just gonna sit back. नहीं, अगर आपको पता है आपको challenges face कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको overcome करना नहीं आता है, so it's absolutely okay, क्योंकि like I said, आपको वहाँ जाके life skills सिखाई जाएगी, and I think that will help. I think she is herself not clear that she should visit a psychological doctor, but then her last statement makes this clear
that she don't know how to overcome it. And then I read it and I found it very interesting. How the two lines is something else and it's just the other way around. Yeah. Correct. So the answer is there in the question itself, I think. Yeah. Yeah. Is she listening to the conversation? I think yes. Love the session today and thank you so much. I think she's the one. I think. No, I am not. Oh, is it? Yeah. So, I think it could be the other one. Yeah. I think it's the other one. Okay. But that's okay. Yeah. So one of the person asked this also, like it's just a rough day. When we talk about that day, like it was just a rough day and it's just stress and work pressure. It might be a myth. He is not sure while asking this question, but people always consider that it's normal to face difficulties in life, like highs and lows, which we spoke about, and they consider this as a part of life. So okay, was this what? So yeah, if you can answer. Even I'm not pretty clear about this myth because we randomly talk about this that it's just a rough day. आज दिन अच्छा नहीं गया. Maybe हो सकता है आज नहीं गया कल अच्छा चला जाए, but I think what depression is like बहुत ज़्यादा दिन तक अगर it's not going good, then maybe you can better explain. Yes. Yeah. So with depression, काफी symptoms होते हैं, list of symptoms होती है. उसमें से अगर 4-5 मैच हो रही होती है और 2 हफ्तों तक होता है, तब हम उसे डिप्रेशन कहते हैं. So there's a proper way of diagnosing it. Coming back जो मुझे समझ आया इनके मिथ से was कि I think हम सब लोग यही बोलते रहते हैं कि नहीं बहुत डिफिकल्ट लाइफ है, बहुत डिफिकल्ट लाइफ है. सो हाँ, शायद लाइफ डिफिकल्ट होगी, अप्स एंड डाउन्स होंगे, ट्रू. हमेशा को यही देखते रहो कि नहीं कुछ खुशी नहीं है एंड सब कुछ ही डिफिकल्ट. आई थिंक दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से कि हमेशा हैप्पीनेस भी ढूंढनी चाहिए एंड दैट्स परफेक्टली व्हाट आई वुड एग्री कि आप जहाँ हैं, जिस स्पेस में हैं, हम सब कुछ ना कुछ चॉइसेस मेक कर सकते हैं. तो आप चॉइसेस बनाइए, बट एट द सेम टाइम find something happy stuff and change if you want to. But yeah, so I thought कि शायद वो ये बोलना चाह रहे थे कि हम शायद एक negative perspective से ही देखते हैं. Yes. So I think I've covered all the myths and questions. Okay, so can I ask a last myth that I have heard a lot? Yes. And maybe you can answer it for me. I know we are tight on time. No. Are we tight on time? Oh yeah. Yeah, we are. But I think we can. I would love to. Like listen from you your myth. So a myth for okay, so a myth for you and a myth for everybody who's seeing us right now is oh, I don't know if it is a myth or not. Shit, I shouldn't have said it that way. But okay, I don't know ये myth है या fact है. Please मुझे ये help कीजिएगा समझने में कि psychologist को कोई भी साइकोलॉजी का प्रॉब्लम या साइकोलॉजी मेंटल इलनेस का कुछ नहीं प्रॉब्लम हो सकता एंड वो परफेक्ट ह्यूमंस होते हैं. What do you have to say about it? I think because we have spoke a lot about this and then you have read, you have studied this in your course curriculum. आपको पता है कि खुद के माइंड के संग कैसे प्ले करा जाता है, how to manage your mind and all those skills you have already. That is why you are the right person to treat those patients. So कई बार ये माइंड में आता है. I don't know it's a fact or it's even I don't know that. But yes, looking at you right now, I'm saying यार इसको तो सब पता है, ये तो अपने आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है. But I think at the end of the day, everything comes down to you are also an human like us. You are not a god कि आपको पहले से पता है कि क्या आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है और इसे कैसे डील करना है. Problems come randomly and we don't know how to deal. Like अभी country change हुआ, शादी के बाद married life and all that. So you can also face those same emotions which we people feel. I think that's the concept, basic concept. But then, yeah, first instant में ऐसा लगता है कि you should know, yeah, you might be knowing how to deal with your problems in your own way. So maybe I think I should read. Yeah, I would love for people to participate and please help me understand क्या ये myth है या ये fact है. मतलब if you can quickly do that. I know काफी long session हो गया है, but I promise we'll wind this up faster. But if I can, yes. So one of the person is telling, I get that a lot. You are a psychologist. I think the person is also a psychologist. How can you go through depression? Oh yeah. So Deep is the name, and the another myth is like some recent incidents prove it as a myth. So I would like to know which incidents you are talking about. DAU_0080. So which incidents he is talking about that
recent incidents prove it as a myth. So people are responding to this because this is a very common myth, because psychology वाले तो यार अपने आप को खुद मैनेज कर सकते हैं, उनको क्या जरूरत है. Oh, someone just said something very interesting. Can you read that? Wow, I like how people are responding. We're good at it. Somebody said something. Oh, I don't. Oh, wow. It's a myth. Do you want to read? Everyone is responding that it's a myth, and one of them responded to us that you are a psychologist. How can you go through depression? He himself is a psychologist, I guess. That is why he's telling us. Okay. Mm-hmm. Okay. So I think I read a lot of us want to believe that it's a myth. I'm glad. I'm very happy to know. Okay. So yes, जैसे तुम बोल रही थी कि I would know things better because I've studied it. True, but I'm a human. True, right? So it's like saying कि एक heart surgeon को कभी भी heart attack नहीं आएगा. That's kind of tricky. I mean, I don't know अगर हम वो बोलेंगे. हाँ, माना कि हार्ट सर्जन को ये पता होगा कि अपना दिल का ध्यान कैसे रखना है, उनको ये पता होगा कि they will probably pick early symptoms कि ये शायद हार्ट अटैक के symptoms हैं, I should reach out. शायद उनको ये भी पता होगा कि अच्छा ठीक है, मुझे क्या ध्यान रखना है पोस्ट में. Agree to that. बट क्या उनको कभी हार्ट अटैक होगा नहीं होगा is kind of funny. या फिर जो ऑर्थोपेडिक है उसको कभी भी बोन फ्रैक्चर नहीं होगा. It's not right. So as a psychologist, yes, हमें शायद ट्रेनिंग दी गई है, हम शायद बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पर हम भी ह्यूमन हैं, हमें भी इमोशंस हैं. There would be time that I'll be low, like I said, for example, when I don't get something, or when I don't, I have a bad day also. So it is a complete myth कि हम perfect human beings हैं. So yeah, we would know how to gauge it better. पर क्या हम बिल्कुल भी prone नहीं हैं is not true. Yeah, I think the same person has responded that it's a myth because psychologists are not supernatural. Very correct. We are social beings. Yeah, and we go I wish we were. Don't you think so? Yes. But no, we are not. Yeah. But thank you so much, जिन लोगों ने respond किया था. Thank you. Yes, psychologists are human, so they have human problems. That's it. Oh, that kind of reminds me very quickly. That movie, Shah Rukh Khan and Alia Bhatt movie. Dear Zindagi. Dear Zindagi. Yeah. Yes. So yeah, so it beautifully portrays this wala part wherein Shah Rukh Khan himself is going through his relationship issue and how he's still a therapist. And I think किसी ने बीच में बोला था कि my psychologist also has a psychologist. Yes, because we have our own thing. When it gets heavy, जैसे किसी का हार्ट टूटेगा, भले ही वो ऑर्थोपेडिक है, he would go. या फिर एक हार्ट सर्जन, उसको अगर हार्ट सर्जरी चाहिए तो वो खुद के लिए नहीं कर सकता है, right? So he reaches out for help. ऐसे ही हमें सिखाया जाता है कि we reach out for help. तो हम भी पर्सनल थेरेपी लेते हैं, and it's a beautiful process. So when I'm saying कि please reach out, I have been to a therapist as a part of my training, and you learn brilliantly. I mean, I remember coming out few days which are too heavy to say, oh my god, yes, that was happening all this while. So I think आप बहुत कुछ सीखते हो अपनी life. So I was not going, I don't have to have a mental health issue to go to a psychologist. I can just go to learn any skill. आपको बहुत कुछ अपने बारे में पता लगता है. It's a growing process. Yeah. Correct. So I remember. Oh, thank you. Somebody just prompted. I remember when I reached out to you while I was struggling to find out what career I want after my BTech. So we gave that. It was a fun day, wasn't it? Yeah, I gave that exam wherein I had to figure out. I don't know what was happening. ये क्या questions पूछ रहे हैं, इससे कैसे पता चलेगा कि क्या? But later on, that report which came out. Oh, the psychometric. Yeah. Aptitude test किया होगा. हाँ, aptitude test था वो. So inclination मेरा किस तरफ है? So. It was a great help. I think someone is responding that therapists help understand a lot about life, and it's that. Yeah. Yeah, so it's a good process to be. We are done for today. If anyone would like to add anything, but then we have already outlined, haven't we? Exceeded the time limits, and I'm very happy that we have people connected all this while. We have 1 hour and 40 minutes approx we have covered. And it was my wow. I hope it was fun, and I hope
it was not too much, or I don't know. Yeah, but I hope it helped. I think जिसको भी सुनना होगा, जिसको भी need है, they were there all the while. Otherwise, people who are struggling with their mental health issues and all such things, they would have listened to us wholeheartedly. I can understand that. But thank you so much. Thank you everyone for attending this live session. And this was my longest live session, and I'm so happy. I think मतलब अंदर से बहुत अच्छा feel हो रहा है कि I had made a good cause, I think, because people who are struggling with this issue, and I think it was I think Kiran Gupta, amazing live session. Thank you so much, Kiran. Thanks everyone. Thank you so much. I think even Simran said something. Thank you guys. Thank you so much for staying in for so long. And Shraddha, I just hope ye शुरुआत हो long sessions की, and you do way more, because what you're doing is beautiful, and I hope you get a lot of such things. And like you said, शायद अगर during this conversation अगर हमने किसी एक point पे भी किसी की help की होगी, तो I think it is worth doing it. And when I was making the list of whom I want for my upcoming live sessions, your name was there at the starting of top 5. But then I was like, मेरे थोड़े followers बढ़ जाते हैं, तब मैं add करूँगी, ज़्यादा लोग सुन पाएंगे. But then I think that this is the correct time, and maybe we can have a later point of time also. We can have you again. I think sure. जैसे ये शायद बहुत जेनरिक था, but अगर मैं कभी भी फ्यूचर में हेल्प कर सकूँ, count me in. I would love to be a part, and yeah, I'll do whatever I can. Yeah. Thank you so much, Jyoti. It's such a pleasure to listening to you. Like सुनते जाओ, like yeah, therapy. I'm getting that therapy. क्योंकि random. I'm glad. Yeah, we have spoke about random things, हमने बहुत अलग-अलग aspects पे बात करी है, so it was really helpful. Thank you guys. Thank you so much for staying connected. Thank you to each one of you. And next Sunday, I'll be live again with another guest, and I'll share the details with you very soon. Thank you so much. Sure. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you everyone for joining. Bye. Bye.